युवा पीढ़ी अब रुकने वाली नहीं है। प्रिय देशवासियों, मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्लिप प्ले करने जा रहा हूं। वैष्णव जना तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। वैष्णव जना तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। पर दुखे करे करे तो ये मान अभिमान नाने रे। आप सभी ने इस गीत को कभी न कभी जरूर सुना होगा। आखिर यह बापू का पसंदीदा गीत जो है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसे सुरों में पिरोने वाले गायक ग्रीस के हैं, तो आप हैरान जरूर हो जाएंगे। और ये बात आपको गर्व से भी भर देगी। इस गीत को गाने वाले ग्रीस के गायक हैं कौन सतान दिनोस कलाइजिस। उन्होंने इसे गांधी जी के 150वें जन्म जयंती समारोह के दौरान गाया था। लेकिन आज मैं उनकी चर्चा किसी और वजह से कर रहा हूं। उनके मन में इंडिया और इंडियन म्यूजिक को लेकर गजब का पैशन है। भारत से उन्हें इतना लगाव है, पिछले 42 वर्षों में वे लगभग हर वर्ष भारत आए हैं। उन्होंने भारतीय संगीत के ओरिजिन, अलग अलग इंडियन म्यूजिकल सिस्टम्स, विविध प्रकार के राग, ताल और रास के साथ ही विभिन्न घरानों के बारे में भी उनकी बुक में लगभग 760 तस्वीरें हैं। इनमें से अधिकांश तस्वीरें उन्होंने खुद ही खींची है। दूसरे देशों में भारतीय संस्कृति को लेकर ऐसा उत्साह और आकर्षण वाकई आनंद से भर देने वाला है। साथियों, कुछ सप्ताह पहले एक और खबर आई थी जो हमें गर्व से भरने वाली है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि बीते 8 वर्षों में भारत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपोर्ट 3.5 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इनका एक्सपोर्ट 60 गुना बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति और संगीत का क्रेज दुनिया भर में बढ़ रहा है। इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सबसे बड़े खरीदार यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूके जैसे विकसित देश हैं। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में म्यूजिक, डांस और आर्ट की इतनी समृद्ध विरासत है। साथियों, महान मनीषी कवि भर्तृहरि को हम सब उनके द्वारा रचित नीति शतक के लिए जानते हैं। एक श्लोक में वे कहते हैं कि कला, संगीत और साहित्य से हमारा लगाव ही मानवता की असली पहचान है। वास्तव में हमारी संस्कृति इसे ह्यूमैनिटी से भी ऊपर डिविनिटी तक ले जाती है। वेदों में सामवेद को तो हमारी विविध संगीतों का स्रोत कहा गया है। माँ सरस्वती की वीणा हो, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी हो या फिर
भोलेनाथ का डमरू, हमारे देवी देवता भी संगीत से अलग नहीं है। हम भारतीय हर चीज में संगीत तलाश ही लेते हैं, चाहे वह नदी की कलकल हो, बारिश की बूंदें हो, पक्षियों का कलरव हो या फिर हवा का गूंजता स्वर। हमारी सभ्यता में संगीत हर तरफ समाया हुआ है। यह संगीत न सिर्फ शरीर को सुकून देता है, बल्कि मन को भी आनंदित करता है। संगीत हमारे समाज को भी जोड़ता है। यदि भांगड़ा और लावणी में जोश और आनंद का भाव है, तो रविंद्र संगीत हमारी आत्मा को आह्लादित कर देता है। देश भर के आदिवासियों की अलग अलग तरह की संगीत परंपराएं, ये हमें आपस में मिलजुल कर और प्रकृति के साथ रहने की प्रेरणा देती है। साथियों, संगीत की हमारी विधाओं ने न केवल हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है, बल्कि दुनिया भर के संगीत पर अपनी अमिट छाप भी छोड़ी है। भारतीय संगीत की ख्याति विश्व के कोने कोने में फैल चुकी है। मैं आप लोगों को एक और ऑडियो क्लिप सुनाता हूं। आप सोच रहे होंगे कि घर के पास में किसी मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा है, लेकिन ये आवाज भी आप तक भारत से हजारों मील दूर बसे साउथ अमेरिकन देश गयाना से आई है। 19वीं और 20वीं सदी में बड़ी संख्या में हमारे यहाँ से लोग गयाना गए थे। वे यहाँ से भारत की कई परंपराएं भी अपने साथ ले गए थे। उदाहरण के तौर पर, जैसे हम भारत में होली मनाते हैं, गयाना में भी होली का रंग सिर चढ़कर बोलता है। जहाँ होली के रंग होते हैं, वहाँ फगवा यानी फगुआ का संगीत भी होता है। गयाना के फगवा में वहाँ भगवान राम और भगवान कृष्ण से जुड़े विवाह के गीत गाने की एक विशेष परंपरा है। इन गीतों को चौताल कहा जाता है। इन्हें उसी प्रकार की धुन और हाई पिच पर गाया जाता है जैसा हमारे यहाँ होता है। इतना ही नहीं, गयाना में चौताल कंपटीशन भी होता है। इसी तरह बहुत सारे भारतीय, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग फिजी भी गए थे। वे पारंपरिक भजन कीर्तन गाते थे, जिसमें मुख्य रूप से रामचरितमानस के दोहे होते थे। उन्होंने फिजी में भी भजन कीर्तन से जुड़ी कई मंडलियां बना डाली। फिजी में रामायण मंडली के नाम से आज भी 2000 से ज्यादा भजन कीर्तन मंडलियां हैं। इन्हें आज हर गांव मोहल्ले में देखा जा सकता है। मैंने तो यहाँ केवल कुछ ही उदाहरण दिए हैं। अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो ये भारतीय संगीत को चाहने वालों की ये लिस्ट काफी लंबी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब हमेशा इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारा देश दुनिया में सबसे प्राचीन परंपराओं का घर है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी परंपराओं और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करें, उसका संवर्धन भी करें और हो सके उतना आगे भी बढ़ाएं। ऐसा ही एक सराहनीय प्रयास हमारे पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के कुछ साथी कर रहे हैं। मुझे ये प्रयास
काफी अच्छा लगा। तो मैंने सोचा इसे मन की बात के श्रोताओं के साथ भी शेयर करूं। साथियों, नागालैंड में नागा समाज की जीवन शैली, उनकी कला, संस्कृति और संगीत, ये हर किसी को आकर्षित करती है। ये हमारे देश की गौरवशाली विरासत का अहम हिस्सा है। नागालैंड के लोगों का जीवन और उनके स्किल्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन परंपराओं और स्किल्स को बचाकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वहां के लोगों ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है लीडी क्रोयू। नागा संस्कृति के जो खूबसूरत आयाम धीरे धीरे खोने लगे थे, लीडी क्रोयू संस्था ने उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया है। उदाहरण के तौर पर नागा लोक संगीत अपने आप में एक बहुत समृद्ध विधा है। इस संस्था ने नागा संगीत के एल्बम लॉन्च करने का काम शुरू किया है। अब तक ऐसे 3 एल्बम्स लॉन्च की जा चुकी है। ये लोग लोक संगीत, लोक नृत्य से जुड़ी वर्कशॉप भी आयोजित करते हैं। युवाओं को इन सब चीजों के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। यही नहीं, नागालैंड की पारंपरिक शैली में कपड़े बनाने, सिलाई बुनाई जैसे जो काम, उनकी भी ट्रेनिंग युवाओं को दी जाती है। पूर्वोत्तर में बैम्बू से भी कितने ही तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। नई पीढ़ी के युवाओं को बैम्बू प्रोडक्ट्स बनाने का भी सिखाया जाता है। इससे इन युवाओं का अपनी संस्कृति से जुड़ाव तो होता ही है, साथ ही उनके लिए रोजगार के नए नए अवसर भी पैदा होते हैं। नागा लोक संस्कृति के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, इसके लिए भी लीडी क्रोयू के लोग प्रयास करते हैं। साथियों, आपके क्षेत्र में भी ऐसी सांस्कृतिक विधाएं और परंपराएं होगी। आप भी अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के प्रयास कर सकते हैं। अगर आपकी जानकारी में कहीं ऐसा कोई अनूठा प्रयास हो रहा है तो आप उसकी जानकारी मेरे साथ भी जरूर साझा करिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा गया है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात कोई अगर विद्या का दान कर रहा है तो वो समाज हित में सबसे बड़ा काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी पूरे समाज को रोशन कर सकता है। मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि आज देश भर में ऐसे कई प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से 70-80 किलोमीटर दूर हरदोई का एक गांव है बांसा। मुझे इस गांव के जतिन ललित सिंह जी के बारे में जानकारी मिली है, जो शिक्षा की अलग जगाने में जुटे हैं। जतिन जी ने 2 साल पहले यहाँ कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर शुरू किया था। उनके इस सेंटर में हिंदी और अंग्रेजी साहित्य, कंप्यूटर, लॉ और कई सरकारी परीक्षाओं की तैयारियों से जुड़ी 3000 से अधिक किताबें मौजूद है। इस लाइब्रेरी में बच्चों की पसंद का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ मौजूद कॉमिक्स की किताबें हो या फिर एजुकेशनल टॉयज बच्चों को खूब भा रहे हैं। छोटे बच्चे खेल खेल में यहाँ नई नई चीजें सीखने आते हैं। पढ़ाई ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन, करीब 40 वॉलंटियर्स इस सेंटर पर स्टूडेंट्स को गाइड करने में जुटे रहते हैं। हर रोज गांव के तकरीबन 80 विद्यार्थी इस लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं। साथियों, झारखंड के संजय कश्यप जी भी गरीब बच्चों के सपनों को नई उड़ानें दे रहे हैं। अपने विद्यार्थी जीवन में संजय जी को
अच्छी पुस्तकों की कमी का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उन्होंने ठान लिया कि किताबों की कमी से वे अपने क्षेत्र के बच्चों का भविष्य अंधकारमय नहीं होने देंगे। अपने इस मिशन की वजह से आज वो झारखंड के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी मैन बन गए हैं। संजय जी ने जब अपनी नौकरी की शुरुआत की थी, उन्होंने पहला पुस्तकालय अपने पैतृक स्थान पर बनवाया था। नौकरी के दौरान उनका जहां भी ट्रांसफर होता था, वहां वे गरीब और आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी खोलने के मिशन में जुट जाते हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने झारखंड के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोल दी है। लाइब्रेरी खोलने का उनका यह मिशन आज एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले रहा है। संजय जी हो या जतिन जी, ऐसे अनेक प्रयासों के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेडिकल साइंस की दुनिया ने रिसर्च और इनोवेशन के साथ ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरणों के सहारे काफी प्रगति की है। लेकिन कुछ बीमारियां आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसी ही एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये मुख्य रूप से एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जो किसी भी उम्र में हो सकती है। इसमें शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। रोगी के लिए रोजमर्रा के अपने छोटे छोटे कामकाज करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरीजों के उपचार और देखभाल के लिए बड़े सेवाभाव की जरूरत होती है। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में सोलन में एक ऐसा सेंटर है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बना है। इस सेंटर का नाम है मानव मंदिर। इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी द्वारा संचालित किया जा रहा है। मानव मंदिर अपने नाम के अनुरूप ही मानव सेवा की अद्भुत मिसाल है। यहाँ मरीजों के लिए ओपीडी और एडमिशन की सेवाएं 3-4 साल पहले शुरू हुई थी। मानव मंदिर में करीब 50 मरीजों के लिए बेड्स की सुविधा भी है। फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी के साथ साथ योग प्राणायाम की मदद से भी यहाँ रोग का उपचार किया जाता है। साथियों, हर तरह की हाईटेक सुविधाओं के जरिए इस केंद्र में रोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का भी प्रयास होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जुड़ी एक चुनौती इसके बारे में जागरूकता का अभाव भी है। इसलिए यह केंद्र हिमाचल प्रदेश ही नहीं, देश भर में मरीजों के लिए जागरूकता शिविर भी आयोजित करता है। सबसे ज्यादा हौसला देने वाली बात यह है कि इस संस्था का प्रबंधन मुख्य रूप से इस बीमारी से पीड़ित लोग ही कर रहे हैं। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला बाल्दी जी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अध्यक्ष बहन संजना गोयल जी और इस एसोसिएशन के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले श्रीमान विपुल गोयल जी इस संस्थान के लिए बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। मानव मंदिर को हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के तौर पर विकसित करने की कोशिशें भी जारी हैं। इससे यहाँ मरीजों को और बेहतर इलाज मिल सकेगा। मैं इस दिशा में प्रयासरत सभी लोगों के हृदय से सराहना करता हूँ। साथ ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सामना कर रहे सभी लोगों की बेहतरी की कामना करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात में हमने देशवासियों के जिन रचनात्मक और सामाजिक कार्यों की चर्चा की, वो देश की ऊर्जा और उत्साह के उदाहरण है। आज हर देशवासी किसी न किसी क्षेत्र में, हर स्तर पर
देश के लिए कुछ अलग से काम करने का प्रयास कर रहा है। आज की चर्चा में ही हमने देखा G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयोजन में हमारे एक बुनकर साथी ने अपनी जिम्मेदारी समझी, उसे निभाने के लिए आगे आए। इसी तरह कोई पर्यावरण के लिए प्रयास कर रहा है, कोई पानी के लिए काम कर रहा है। कितने ही लोग शिक्षा, चिकित्सा और साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर संस्कृति, परंपराओं तक असाधारण काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हमारा हर नागरिक अपने कर्तव्य को समझ रहा है। जब ऐसी कर्तव्य भावना किसी राष्ट्र के नागरिकों में आ जाती है तो उसका स्वर्णिम भविष्य अपने आप तय हो जाता है। और देश के ही स्वर्णिम भविष्य में हम सबका भी स्वर्णिम भविष्य है। मैं एक बार फिर देशवासियों को उनके प्रयासों के लिए नमन करता हूं। अगले महीने हम फिर मिलेंगे और ऐसे ही कई और उत्साहवर्धक विषयों पर जरूर बात करेंगे। अपने सुझाव और विचार जरूर भेजते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Of the Constitution Day celebrations as we observe the day when the Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on the 26th of November 1949 and the Constitution came into effect on the 26th of January 1950. We are honoured by the august presence of the Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. We would also like to welcome on the dais the Honourable Chief Justice of India, Dr. Justice Dhananjay Yashwant Chandrachud, the Honourable Minister of Law and Justice, Shri Kiren Rijiju, the Honourable Shri Justice Sanjay Kishan Kaul, Judge Supreme Court of India, Honourable Shri Justice S. Abdul Nazir, Judge Supreme Court of India, the Honourable Minister of State of Law and Justice, Professor S.P. Singh Baghel, the Honourable Attorney General for India, Shri R. Venkatramani, and Shri Vikas Singh, President of the Supreme Court Bar Association. May I request the Honourable Shri Justice Sanjay Kishan Kaul, Judge Supreme Court of India, to deliver the welcome address. माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस जस्टिस चंद्रचूड़, श्री किरण रिजिजू, my brothers, Justice Nazir, the Attorney General, the President of the Bar, distinguished guests, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to welcome you all to this year's Constitution Day celebrations. This day is of great importance to all Indians. I believe that it is not just an occasion to commemorate the adoption of a truly radical and transformative document, but also a moment to rekindle our commitment to our constitutional values. As we continue this effort, I would like to offer a few thoughts about the nature of this mission. Today, we commonly believe that invoking a court's jurisdiction is a very important way of protecting and enforcing our constitutional rights. We see this taking place in some of the more mundane matters of family and service disputes, etc., and also in cases that are considered to be of great political and public significance. The Constitution tells us to repose our faith in the courts when such problems arise. When our courts evolve a comprehensive right-based jurisprudence, they are rightly seen to be upholding their constitutional duty. Thus, the idea of seeking justice has in many ways become synonymous with courts. This is certainly an area where we can get better. This year's Constitution Day program in many ways reflects this ambition. It aims at enhancing access to justice
through improving various processes of the court. Thus, the working session to be conducted today and tomorrow emphasize different areas of court reform. These include improving judicial infrastructure, adapting to newer technology, learning from the latest methods of case management, etc. Considering the knowledge and the experience of our participants and speakers, I am very confident that this program will enhance our capabilities in this respect. However, it is my firm belief, born from my experience of serving in various courts for over 2 decades, that the mission of enhancing access to justice also requires a more collective effort. This is because our Constitution empowers every democratic institution in our country with the ability to secure individual rights and justice. In practice, this is termed as vernacular constitutionalism. It implies that our vision of justice need not be constrained to the pronouncements of courts or the development of legal doctrine. Instead, it can be a more continuous and decentralized exercise, which involves aspects of day-to-day governance, social movements, and deliberative democracy. To give a few examples, when the feedback of stakeholders is incorporated into law, it essentially preempts a court having to achieve a similar result by reading down or invalidating that rule. Similarly, and this is something I've often emphasized, conducting a proper legislative impact study and examining the social context of the proposed law can be really impactful in preventing unnecessary litigation. Other than examining the viability and desirability of the proposed legislation, it is also important to see whether the existing judicial mechanisms are prepared to adjudicate this new class of litigation that can arise. It is for these reasons that we need to rediscover this oft-forgotten element of our constitutionalism. Not only is it essential for a healthy democracy, it is an underutilized way of securing greater access to justice. Now I would like to highlight areas where our lawmakers and the courts can work together. First is the provision of legal aid. We know that there is a large problem of under-trials languishing in prisons for extended amounts of time, and this is an area towards which we must urgently divert our attention. Our collective endeavor led to a significant change. The recent remission scheme for certain categories of prisoners to commemorate the 75th anniversary of the nation's independence was an exemplar in this regard. We can also concentrate our efforts towards conducting a thorough study of the effectiveness of the existing legal aid process, improving the ways in which legal aid lawyers are selected, provided them with appropriate incentives, training such lawyers more adequately, and introducing monitoring and accountability mechanisms. The second area where such coordination can be useful is in the creation of a comprehensive mediation framework for different kinds of disputes. That can go a long way in reducing the pendency of cases before our courts. I would like to end with a quote from Cicero. "Justice looks for no price and no price. It is sought for itself and is at once the cause and meaning of all virtues." It is my most fervent hope that through the Constitution Day and the programs to be followed this weekend, we can mobilize our collective will to achieve the vision of the social justice expounded in our Constitution by its great drafters. Thank you and Jai Hind. Thank you, sir. May I now request the President, Supreme Court Bar Association, Shri Vikas Singh, to address the audience. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Justice of India, Dr. Dhananjay Chandrachud, Honorable Justice Sanjay Krishan Kaul, Honorable Justice Abdul Nazir, Judges of the Honorable Supreme Court, Chief Justices of various High Courts present here today, Judges of various High Courts present here today, other dignitaries, my colleagues, ladies and gentlemen. We have assembled here today to celebrate the 73rd year of adoption of our Constitution. Our Constitution was framed by a Constituent Assembly.
And the Constituent Assembly, as it was originally framed in 1946, had 389 members. After partition, the number came down to 299. Out of this, 70 were nominated by the princely states, and the rest were elected by an indirect vote from the provincial assemblies. The members of the Constituent Assembly had deep vision, intellect, and caliber. And that is how, with a lot of deliberation, they could produce this magnificent document which we all see today. But unfortunately, what will happen in the years to come could never have been foreseen by the Constituent Assembly. There were certain imperfections in the Constitution. The Constitution gave the responsibility of enacting laws to the Parliament, executing laws to the executive, and upholding the law to the judiciary. The judiciary, in all these years, while doing justice, have also been noticing some imperfections in the original Constitution. And because of the indulgence of the judiciary of noticing these lacunae, the Constitution has been amended 105 times till now. The Constitution is an evolving document, and it has to be an instrument of social change if it has to be addressing the issues of the citizenry of this country. It has to keep evolving. There are several issues which I feel still need definite corrective action. And three things which I think are very important for our Constitution to survive and to prosper and our country to grow and become a world leader is by bringing in law to bar criminals from getting into politics. The anti-defection law, which has been made with a very salutary purpose of ensuring that there is no crisscrossing of people who get elected by a particular political party, needs to be strengthened. A person who is accused or is found guilty of the anti-defection law cannot be permitted to get back into the same house. He should be definitely debarred for the entirety of the house in which he is alleged to have defected. And lastly, I feel that the collegium system also needs improvement. I have always advocated that the collegium system was the right system, provided it functioned properly. And in this functioning that we have seen so far, the basis of envisaging the collegium system was that the judgment of the Supreme Court felt that the judges of the courts and the Supreme Court know the lawyers, and accordingly they are in the best position to select the best of them. The premise on first blush looks very attractive, but on a deeper scrutiny, it is seen that it is impossible for any collegium to know the lakhs and lakhs of lawyers practicing in a high court. There is no method by which the collegium knows where a particular lawyer is eligible or should be elevated. There are lawyers in law firms, there are lawyers in trial courts who deserve to be elevated. But this system of collegium knowing the person personally to elevate is an extremely faulty system, and in the process our judiciary is suffering, and the judiciary, being the upholder of the Constitution, needs to be given topmost primacy, because even a law passed by unanimity by the entire Parliament can be set at naught by two judges sitting in the courtroom. That's the kind of power that the judges wield in our system. And to ensure that this power remains in the right hands, we have to ensure that the system remains relevant. I will only beseech
the audience here today to think about this, because our constitution, in order to be relevant and vibrant, has to keep churning and finding out better solutions. With these words, I will wish all of you a very happy 73rd Constitution Day in our 75 years of independence. Thank you. Thank you, sir. May I now call upon the Honorable Attorney General for India, Shri R. Venkataramani, to say a few words. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Honorable the Chief Justice Dr. Dhananjay Chandrachud, former Chief Justice of India and former judges of the Supreme Court and judges of the High Court, Honorable Minister for Law and Justice and Honorable Minister for State of Law and Justice, Sri Tushar Mehta, Solicitor General, Mr. Vikas Singh, President SCBA, and my other friends in the bar, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to be part of this assembly on being together to celebrate our twist of destiny with the Constitution 75 years ago, in solemn affirmation of our soulful commitment to it. When we gather in such solemnity year after year, we renew our affinity to all its aspects, and most fundamentally to the Constitution as our inseparable partner of life. Every utterance of the Constitution takes place, first through we the people of Bharat and a vibrant Bharat. We the people are the soldiers of a great nation who keep faith with the Constitution by visiting its processes and promises in many ways and take pride in being free and being together. Being together as one great family tree. The Bharatiya family is unique. Its roots are ancient. Its wealth of knowledge and culture are special. Its contributions to world civilizations are also special. All those enrichments of the past are being splendidly carried, shared, and exchanged by we the people of India, or Bharat, all under the common heritage of a country and under the umbrella of the Constitution. We therefore have a solemn pledge to embrace the legal fraternity and speaking constitutional language with we the people of Bharat, to journey with them, to share their pains and agonies, joys and tears, and to lend all our shoulders in promotion of their well-being and with equal regard for all lives. But the tasks are great and challenging. We are yet to eradicate some of the pernicious problems of caste and other social divides. The claims to equality is complex, and accommodation to be made call for coordination between law, society, and the courts, without, however, creating new divides. The new entrance in the field of human rights, particularly social media, has thrown open challenges of regulation. As we look at the number of rural, unemployed, urban adolescents in crimes and jails, it is disconcerting. The day when jails are empty of youth, the day when jails become really soul transformative, the day when our courts at the initial levels become comfort clinics, the day when every citizen in need of justice and finds it at the doorsteps, that day ought to be the day the legal fraternity must be looking for. As we look at the disappointed rush for some employment, at the other of somewhat educated youth, it is disturbing. Economically deprived sections of minorities or otherwise, another set of our people whose justice needs also call for special investments. I do not wish to be talking stuff of distress. All this I say is that I share deeply the pains and agonies of all those who are in urgent need of constitutional justice. The new roads of constitutional justice for them have to be laid. The Honorable Prime Minister always listens, and his heart and mind never rest without listening. The 200 and odd years of constitution making across the globe and their duration tell us great lessons. The fragile democracies in various parts of the world teach us lessons. The loss of ability of people in certain countries to staunchly abide by democracy and stand firm by rule of law are also lessons. It is only by keeping agile on our freedoms and freedoms of those in lack of it. It is only by swearing by an open society where all distinctions can melt that we would be keeping faith with the Constitution.
The legal profession and the courts are twin gateways. I do not propose to dwell on themes only of concern to the Supreme Court bar. We are only a microcosm. However, some issues of concern may be flagged. It is important that government stops overloading the court with endless statutory appeals, alongside a seamless and huge flow of cases from high courts. The conversion of Supreme Court into a small causes court must stop, even though for one in trouble, any court is good enough. Whether we keep engaging our thoughts on a National Court of Appeals or not, we need to strengthen our high courts and also decongest them, which alone can stem the flow of work in the Supreme Court. Our property dispute laws must undergo review and must become settlement commissions away from adversarial motions. Our family courts must become family comfort institutions. For doing all this, we need a permanent law reforms commission with legal reforms wing, court reforms wing, coordination wing with the courts, and a dedicated research wing connected to law schools. The vast spread of our people in varied deprivations who are justice hungry remain untouched. They lack public defenders' assistance. They lack neighborhood legal service provisions which must serve them 24 hours like hospitals. Every panchayat must have a legal service provision. In a digital age, making this happen cannot be a problem. The structure of free legal services, even in semi-urban and urban, are still far from matching the needs of demands. Most important, and radically new ways of conceiving and organizing their basic needs through innovative institutional structures need to be explored. Socio-economic entitlements commissions, which can resolve social and economic needs and demands of deprived sections of the community, may be conceived to relieve courts from inadequately addressing them. Also, the need to come to courts to settle matters of salary or pay or pensions or retirement benefits must cease. If there be a justice provision tax on the rich and the able, let it be conceived. I suppose the administration of justice comprehends all means of fulfilling these tasks. For long, governments have been talking about litigation policies. There is no reason why this policy cannot emerge. Every department must have a resolution wing with a competent and independent legal equipment to resolve fact-based issues. And every matter need not be a legal dispute matter. Only complex legal issues which cannot be otherwise settled must go for institutional resolution. I am confident that the government will lend its ears to an earnest Attorney General to draw a quick roadmap and all the above. If only we dedicate 1 year exclusively for each subject, we can progress with great dispatch. I think rule of law is a non-violent revolution. We do not need any violent revolutions, as all such revolutions are paths of totalitarianism. The more and more of rule of law means room for no violence. Bharat can lead the way by setting its own benchmarks. I would like to look for the day when the West may come for learning from us on justice standards. Colonialism of minds and peoples will then cease. By doing all this, our constitution will be beyond reputation and then refutation. Let us continue to march on the grand journey towards care of all and compassion without discrimination. I conclude my speech with a poetry addressed to my motherland. O nation of great mind and thoughts of past so long and cradles many, that nurtured knowledge of shades many, many. O nation of people with ancient roots, with entanglements thin and bosoms lodge. O nation that know the dark divisions of faith and caste, like spider webs can trip and trap. O nation of many tongues and cultures, faiths and creeds, and blends and bonds, of fibers strong, why bleed our minds, why freeze our hearts, why fence our homes. With petty thorns, swords once drawn are poison strong, words once dropped are slipping weeds. Fold all your clashes, fold all your noises. Little device with constant chases can grow to seismic seasons quick. In composure, do all things flourish. In common pursuits of common weal, little skirmishes do dissolve. O nation of paths in beauty drawn, in common resolve of love for all, let our oars do swing and hail our life. Thank you for your attention. Thank you, sir. May I now request the Honorable Union Minister of Law and Justice, Shri Kiren Rijiju, to address the audience. Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachud, Honorable Supreme Court Judge,
Justice Sanjay Kishan Kaul, Honorable Judge, Supreme Court of India, Justice Abdul Nazir, Honorable Judges of the Supreme Court, Honorable former Chief Justice of India, my colleague S.P. Singh Baghel, the Honorable Chief Justices and the Judges of the High Courts, the Attorney General for India, Sri R. Venkat Ramani, Solicitor General Tushar Mehta, President Bar Council of Supreme Court Bar Association, Sri Vikas Singh, Chairman Bar Council of India, Sri Manan Kumar Mishra, senior officers of the Government of India, friends from media, ladies and gentlemen. It is my honor to address this very august gathering to celebrate the Constitution Day. Constitution Day, or commonly referred as Samvidhan Divas, is annually celebrated to mark the adoption of Indian Constitution by the Constituent Assembly in 1949, and also to remind us the significance of the historic day. Constitution is the bedrock upon which Indian nation stands and continues to achieve great heights every passing year. Today, this occasion gives me the opportunity to convey my gratitude towards the makers of the Constitution and also to promote and to reaffirm our constitutional values and reiterate the constitutional promise of justice, liberty, equality, and fraternity towards the citizens of this nation. It is also an occasion to remember with gratitude the struggles and the sacrifices of our founding fathers. The founding fathers placed immense responsibility on the coming generations of countrymen to take the country forward in the path of progress. It would be apt to recall the words of Baba Saheb, Dr. B.R. Ambedkar, when he cautioned us by saying, "Let us not forget that this independence has thrown on us great responsibilities. By independence, we have lost the excuse of blaming the British for anything going wrong. If hereafter things go wrong, we will have nobody to blame except ourselves." Justice is the foremost introductory vision and aspiration that the people of India have promised to give to themselves and its generations. The constitutional promise of equal justice is based on equal opportunity, and it is also a dream emanating from Article 39A. It is our constant endeavor to bring down barriers for accessing justice through integrating technology and other meaningful tools on making information accessible on a routine basis and in an easy to understand manner. In a country as large as ours, last mile delivery of justice remains critically challenged. New solutions have to be generated, integrated, and interoperated across various available legal platforms to actualize the last mile delivery of legal services. From courts to citizens, quick, simplified, and affordable access to justice should be the buzzword.